गांधी जी ने बोला that there is a higher court than the court of justice, which is the court of conscience. This quote talks about the importance of conscience, right? Conscience is a kind of the inner voice in a person. It's a kind of, it is generally said that conscience is the voice of the God. You must have experienced this thing. Whenever we are doing a thing which is not in line with our thoughts, there is a voice which is inside us, which tells that your actions is right or wrong. It is morally correct or wrong, right? So kahin na kahin there is a kind of trial which happens inside every person whoever is committing a wrong thing or a sin. So Gandhi ji baat karte hain that we have to focus on improving our conscience. We have to follow our conscience, because जो conscience है वो हमें हमेशा बताता है that हमारे actions हैं वो सही हैं या गलत है. So if we are able to follow this thing in a way, a lot of problems which we face in the present times, in the world of bureaucracy as well. There are a lot of bureaucrats which are engaged in corruption, or they're not able to implement the policies which are being formed by the government. If they are going to follow their conscience, then they're going to feel that the actions which they are doing are not morally correct. And definitely it can keep a check on a person's action, that he's committing right or wrong. So I hope आपको ये चीज़ समझ में आया होगा. Conscience is an important part of your ethics syllabus, and you can definitely use this quote in your answers. With that, let's begin today's newspaper discussion. And the first article which came in is related to the recent RBI transfer to the government. Basically, RBI has transferred almost 2.1 lakh crore rupees, which is a huge amount, to the government. So this news becomes significant, and it's important for us to understand that what is the role of RBI in our country, how RBI is able to earn money so that it can transfer huge amount of money to the government, how this transfer of money can help the government to follow the challenges like fiscal deficit, or it can also be contributing to the capital expenditure. We are going to see all those things, and with that, let's begin today's discussion. So, first of all, uh, I had mentioned almost 2.11 lakh crore has been transferred to the government, and basically, you need to understand, and which is an important fact for your prelims examination, that what is the framework for it. So, there is an economic framework set up by Bimal Jalan Committee. Bimal Jalan Committee, who was the former governor of the RBI. Bimal Jalan has set up a criteria that RBI, whatever money RBI is going to earn, it has to keep almost 5.5 to 6.5% as a contingency fund. What is contingency fund? Which is going to be used in bad circumstances, or as a safe money to keep with the daily expenses which happens, because RBI के खर्चे भी हैं बहुत सारे, right? उसको keep up करने के लिए there should be a contingency which should be 5.5 to 6.5% of the profits which RBI generates, right? और RBI काफी ज़्यादा profit generate करता है because it is the banker of the bank. We are going to understand how RBI generates money, what are the sources of RBI's income. We are going to see all those things, right? So ये एक framework दिया गया था. उसके पहले why this committee was formulated, उसके पहले क्या था कि RBI बहुत ज़्यादा money it was keeping with itself almost 40% of the money of the profits, और कहीं ना कहीं ये useless था जो कि सिर्फ रखा रहता है. एंड अगर ये मनी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में हमें इंक्रीज देखने को मिलता, एंड दैट मनी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अ बेटर मैनर, जो कि अभी के समय में हमें देखने को मिलता है, राइट? सो दिस वाज द थिंग. ये आप जो कमिटी है इसको ध्यान में रख सकते हैं. इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? सो दिस इज द थिंग. अब देखते हैं जो ट्रांसफर उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, सो यू मस्ट बी अवेयर दैट इन 2020 कोविड-19 आउटब्रेक केम इन एंड इट वाज अ काइंड ऑफ हैवॉक ऑन द वर्ल्ड. इसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा. गवर्नमेंट हैड टू बोरो मोर मनी, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो ऑलमोस्ट 9% के करीब चला गया, राइट? फिस्कल डेफिसिट आप समझते होंगे कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी विच गवर्नमेंट एक्सपेंड्स. गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट कुछ पैसा स्पेंड करती है, गवर्नमेंट
थ्रू आउट दी वर्ल्ड बहुत सारी गवर्नमेंट्स क्या है थोड़ा एक्सेस मनी स्पेंड करती है, राइट, और उसके लिए वो बोरो करती है। सो फिस्कल डेफिसिट यही होता है, इट इज दी एक्सेस ऑफ द मनी विच इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। सो ये 9% के करीब हो गया था। अब बोला ही जाता है कि ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एन इकोनॉमी। वाई? बिकॉज अगर ये मनी गवर्नमेंट पे नहीं कर पाती या फिर कुछ एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें थोड़ा क्राइसिस हो जाए, एंड इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू पे द मनी बैक। और ये बहुत सारी कंट्रीज का होता है। पाकिस्तान क्यों एक IMF का जो बेल पैकेज है, जो जो एक लोन पैकेज है, उसके लिए कर रहा है, बिकॉज उनकी कंट्री में डेब्ट का ही प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। इसलिए ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट, ज़्यादा डेब्ट इज नॉट गुड फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी। ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है, ये बिजनेस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट wants to reduce the fiscal deficit, and this money, it is being estimated that it can help to reduce the money, because it is almost around 0.4% of the GDP. जो ये money transfer हुआ है, it's almost around 0.4% of the GDP. Apart from that, it is going to help to increase the revenue of the government. It is going to compensate for the government policies which haven't bear the fruits. For example, the disinvestment policy. Government का ये policies are that जो हमारे PSUs हैं, which are not fruitful, which are not profit making, उनको disinvest कर देना चाहिए। मतलब उनको प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ स्टेक्स दे देना चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू जनरेट मनी फ्रॉम दोस PSU, राइट। और क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स उनको रन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट, राइट। सो डिसइन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था वो पूरा नहीं हो पाता है। दैट्स वाई दैट कैन ऑल्सो कंपनसेट फॉर दोज थिंग। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कैन हेल्प टू focus on the capital expenditure. The capital expenditure is an important part for any country. You know, by judging the money which is spent on the capital expenditure, we can judge how much government is focusing on building or focusing on long-term gains. Just one second. Right, so that's why ये मनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने को भी इस्तेमाल हो सकता है, and that is the benefits which are related to this RBI transfer, right? Now, in this article, it's also equally important to understand the RBI role in our country. RBI के क्या काम है, how RBI generates money, right? We are going to see all those things. Let's begin. सो अगर हम आरबीआई की सोर्सेज की बात करें, कहाँ कहाँ से आरबीआई मनी जनरेट करते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आरबीआई डू। आपको पता है कि आरबीआई इज एंगेज्ड इन लॉट ऑफ थिंग्स सच एज मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम इनके बारे में देखने वाले, नाम से मत डरिएगा। और सबसे पहला चीज जो ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपको पता है कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, व्हेन वी सी दैट रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, राइट, रुपी जो डेप्रिशिएट कर रहा है, उस समय पर आरबीआई हैज सर्टेन टूल्स थ्रू विच इट कैन हेल्प टू टैकल दिस प्रॉब्लम। आरबीआई क्या करती है, डॉलर्स को मार्केट में सेल करती है, राइट। डॉलर्स को मार्केट में सेल करेगी तो उससे डॉलर का क्या है, डॉलर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, राइट। और उससे क्या होगा, रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ है। और ऐसी अगर रुपये ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, देन ऑल्सो आरबीआई कैन बाय द डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट। क्यों ऐसा करेगी आरबीआई? क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि जो रुपी है वो ज़्यादा अप्रिशिएट हो, बिकॉज रुपी का ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स थोड़े कम कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, राइट। दिस इज द थिंग। सो दिस थिंग इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। और आरबीआई जब इन चीज़ों को करती है, सो आरबीआई जनरेट मनी, आरबीआई जनरेट द इनकम, राइट। एट द सेम टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन होते हैं आरबीआई के, आपको पता होगा आरबीआई is the bank of the government, and RBI holds the foreign reserves which are there. जो RBI जितने भी foreign reserves है government का, वो RBI अपने पास रखती है, and that foreign reserves generate interest when invested. आरबीआई क्या करती है, इस फॉरेन रिजर्व को इन्वेस्ट कर देती है इन डिफरेंट कंट्रीज बैंक, और उसकी वजह से आरबीआई क्या करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करती है, और इससे दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ आरबीआई's इनकम, राइट। एट द सेम टाइम आपको पता होगा आरबीआई आल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द बैंक्स, टू द आपको पता RBI is also known as the banker of the bank, right? It is known as banker of the banks or the banker of the last resort. सो बेसिकली हमारे कंट्री में जितने भी बैंक है, कहीं ना कहीं वो लोन कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, बिकॉज इट इज द इशू ऑफ द करेंसी। सो वो जो पैसा दिया जाता है, इट इज गिवन ऑन सम इंटरेस्ट, और वो जो इंटरेस्ट बैंक्स पे करते हैं, इट जनरेट्स मनी फॉर द आरबीआई, राइट। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो बैंक रेट के अलावा जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, उसके अलावा देयर सर्टेन अदर थिंग्स जो कि शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है एज अ टूल फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट और रिवर्स रेपो। आपको पता होगा दीज आर दी शॉर्ट टर्म लोन टूल्स विच आरबीआई यूजेस। सो रेपो रेट में बेसिकली क्या करती है,
आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाती है, राइट। और ये कैसे काम आता है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। मान लीजिए हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, ताकि जो शॉर्ट टर्म लोन लेना बैंक्स के लिए है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बैंक्स तक नहीं जा पाएगा, बिकॉज आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, राइट। सो द थिंग इज, फिर वो क्या करेंगे, ज़्यादा बोरो नहीं करेंगे, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द लिक्विडिटी। और सिमिलरली वो रिवर्स रेपो को भी बढ़ा देंगे। रिवर्स रेपो में बेसिकली क्या होता है, बैंक जो आरबीआई को बोरो कर बेसिकली लोन देते हैं, उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। रिवर्स रेपो इज द इंटरेस्ट विच बैंक्स गेट व्हेन दे प्रोवाइड लोन्स टू द आरबीआई, राइट, ऑन द फेस ऑफ ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बेसिस पे होता है। सो रिवर्स रेपो जब बढ़ाया जाता है, तो बैंक्स को इंसेंटिव मिलता है आरबीआई को बोरो करवाने के, मतलब क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, दे आर गोइंग टू कीप देयर मनी विद द आरबीआई। और उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, वहां पे लिक्विडिटी कम हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इसका उल्टा चीज भी किया जा सकता है, इफ दे वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशन आपको पता होगा, मनी सप्लाई इज इम्पोर्टेंट फॉर द मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी, फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। और आपको पता होगा that during times of COVID, because government wanted to increase the economic growth, तो आरबीआई ने रेपो रेट काफी कम किया था। बट हम देखते हैं कि 2022 के बाद से वी आर सीइंग इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर रही है, राइट। दिस इज द थिंग, these are the tools which are being used by RBI and which also generates money. I hope आपको ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ये सब भी समझ में आया होगा, and these things becomes important for your prelims examination, right? Let's move forward and see certain other things which RBI is engaged in. What are the main functions of RBI? सबसे पहले हमने बात किया कि RBI has the monetary function. What is monetary function? आपको पता होगा RBI is engaged in monetary policy activities. मतलब RBI also has this monetary policy committee which takes certain decisions to the liquidity adjustment related to the repo rate and reverse repo. आपको हर दूसरे तीसरे महीने में दिखता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिली और उसने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया या कम किया इतने बेसिस पॉइंट से, सब चीजें होता है। इसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, राइट। दिस इज द थिंग। एट द सेम टाइम अगर हमें इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ाना है, ये चीज भी उसके थ्रू होता है। फॉर एट द सेम टाइम आरबीआई ऑल्सो इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स। व्हाट दैट मींस इज आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू ऑल द बैंक्स व्हिच आर देयर, राइट। हम बैंक से लोन लेते हैं टू डू बिजनेसेस फॉर सर्ट डिफरेंट थिंग। बैंक किससे लोन लेते हैं, बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, राइट। इट इज आल्सो द इश्यूअर ऑफ द करेंसी। आपको पता होगा हमारी जितनी भी करेंसी, इफ यू हैव सीन द करेंसी नोट, यू मस्ट हैव सीन that authority who have written that I am the one who is authorizing thing, and who is that person, the RBI governor is the signatory who signs on the currency note and legalizes the currency note, right? So RBI is also the issuer of the currency who holds the trust among the citizens. At the same time, it is also the regulator and supervisor of the financial system. हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम है, उसमें कोई भी नया रेगुलेशन बनाना है, कोई भी नया रूल्स हमें लेके आना है, so that is done by the RBI. At the same time, it also supervises. What that means is, अगर किसी बैंक में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर बैंक इज गोइंग बैंकरप्ट, राइट, सो कहीं ना कहीं उसको कौन संभालेगा, आरबीआई देखिए उसको। आपने येस बैंक का एग्जांपल देखा होगा, व्हेन इट वाज इन अ वेरी डिसमल कंडीशन, आरबीआई केम फॉरवर्ड एंड इट आल्सो ब्रॉट इन सर्टेन अदर बैंक्स टू सपोर्ट द येस। इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक। थिंग इज, आरबीआई क्यों ऐसा करती है, बिकॉज अगर एक भी बैंक फेल करता है, तो उससे क्या होगा, जो डिपॉजिटर्स है उनका मनी लॉस हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इसलिए आरबीआई सुपरवाइज करती है और चेक करती है हर एक बैंक प्रॉपर्ली फंक्शन करे, बिकॉज बहुत सारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा बैंक में मनी डिपॉजिटेड होता है। अगर वो मनी फेल हो जाता है, इट इज गोइंग टू क्रिएट बैड इमेज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और लोग क्या करेंगे, लोगों का एक बैड परसेप्शन बनेगा टुवर्ड्स द बैंकिंग सिस्टम, देन दे आर नॉट गोइंग टू सेव देयर मनी और डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक्स, राइट, दैट इज गोइंग टू हर्ट आवर इकोनॉमी। बिकॉज आपको पता होगा कि बैंक में जब पैसा सेव किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, देन इट इज गिवन एज अ लोन टू अदर इंडिविजुअल्स और कंपनीज, और वो फिर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होता है, राइट, एंड दैट इज द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम which works. So कहीं ना कहीं इसको सुपरवाइज और रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, and that is the role of RBI. Apart from that, as I mentioned, it also manages the forex exchange reserve of the government, not only US dollar but certain other currencies, also gold and the SDR, which are issued by the IMF, right?
These are also important thing which is the role of RBI. Apart from that, it's the lender of the last resort. अगर कोई बैंक बहुत खराब सिचुएशन में है, then who is going to support them? Then obviously RBI is the one जो उनको support करने वाला है. I have given you the example of Yes Bank. Right. And also ये भी आपको समझ आ रहा है, बैंक आरबीआई इज द मेन बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. आरबीआई वो बैंक है जो गवर्नमेंट की फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है. आरबीआई ऑल्सो गिव्स मनी टू द गवर्नमेंट, जो कि हमने भी देखा. आरबीआई का जो सरप्लस प्रॉफिट होता है वो आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं. राइट. दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. एक और डिबेट को आपको समझना चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक. रिसेंटली जब ये बहुत सालों से आरबीआई इज ट्रांसफरिंग इट्स प्रॉफिट्स टू द गवर्नमेंट, एंड देयर हैज बीन अ डिबेट विच इज इन न्यूज़ कि देयर इज लेस ऑटोनॉमी इन द आरबीआई. राइट. गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मनी आरबीआई से ले रही है. आरबीआई इज नॉट एबल टू फंक्शन ऑटोनॉमसली. राइट. ये भी एक इशू हमारी कंट्री में चल रहा है, एंड विच इज़ अ डिबेट विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. So as I mentioned, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो you have to understand that there are certain committees, like for example Bimal Jalan committee, जिन्होंने ये ensure कि they have created an economic framework of transferring the money. Right. और ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट ही लेती है. डेफिनेटली बिकॉज आरबीआई इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट का उसमें इन्फ्लुएंस है, बट स्टिल आरबीआई एक्ट एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन. राइट. आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी एक्शंस होते हैं वो आरबीआई ऑटोनोमसली लेती है. आरबीआई के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर. दो वी हैव सीन सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्जिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, जिसकी वजह से कुछ आरबीआई के गवर्नर्स ने रिजाइन भी किया था. राइट. दैट वाज द थिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन. बट we have to see that RBI overall is an autonomous institution. The decision which is take are being formulated very based on the empirical evidences and based on objectivity. Right. This is the thing which is there. I hope आपको ये article समझ में आया होगा. You understood how RBI earns the money by and how RBI share its money to the government. At the same time, what are the broader functions of the RBI in our economy? And you need to understand it is the most important bank in our country. It is responsible for various things which we have discussed: controlling the inflation, obviously on the increasing the economic growth, and things like that. So with that, let's move forward and see the next news. All right, this news is really interesting news, and it is from the history section from your syllabus. And आपको पता होगा कि हिस्ट्री सेक्शन में सोर्सेज आर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब हम सभी को पता है दैट जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमने तो खुद उस चीज को नहीं देखा ना. देयर इज नो टाइम मशीन, और वी हैवंट seen those events which has happened. So what we do to study history is we try to study the resources which we get. Right. Through that sources we try to inference that, we try to make some inferences that how those things would have happened, what things would have happened at the time. All those things we try to do. So अभी रिसेंटली एक नया स्टडी आया है विच हैज चेंज द वे वी यूज टू स्टडी द सोर्सेज. बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है जो स्टोन एज है इसको वुड एज भी बोला जा सकता है. ऐसा क्यों बोला जा सकता है? बिकॉज देयर हैज बीन अ स्टडी विच हैज बीन कंडक्टेड इन दी स्कॉनिंगन स्टेट ऑफ जर्मनी. जर्मनी का मैप आपको पता होगा. सो जर्मनी में स्टेट है स्कॉनिंगन, जहाँ पे एक स्टडी में पाया गया सम वुडन टूल्स विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. These wooden tools, और इन wooden tools में खासियत देखने को मिली. राइट. अभी तक ये माना जा रहा था दैट the early man which were there, उनकी वो बस स्टोन के टूल्स यूज करते थे. राइट. स्टोन के टूल्स. एंड वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन अ डिफरेंशिएशन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स. ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जितना ज़्यादा स्टोन टूल्स में एडवांसमेंट किया गया उस हिसाब से हमने अपने पीरियड्स को बांट रखा है. फॉर एग्जांपल पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. राइट. देयर वर सर्टेन चेंजेस which were happened. बट ऐसा बोला जा रहा है कि उस समय पर सिर्फ स्टोन टूल्स ही नहीं यूज किया जाते थे, बट ऑल्सो देयर वर अदर टूल्स which were there. There were metals which were used. Right. मेटल इज तो हम बहुत बाद में देखते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में. राइट. बट उस समय में ऐसे वुड्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था. बट बिकॉज वुड एक ऐसा एलिमेंट है जो जल्दी डिग्रेड हो जाता है देन स्टोन, इसीलिए उनके जो हमारे जो एविडेंस है वो कम देखने को मिलते हैं. बट स्कॉनिंगम में एक स्टडी के थ्रू देखा गया. राइट. कि वहाँ पे वुड्स के कुछ टूल्स मिले हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच एडवांस. दे आर टेक्नोलॉजिकली, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, बट दे आर दे हैव बीन शार्पन्ड. दे वेरियस टेक्निक्स which have been used to create those tools. Right. And that shows that wood was also an important part of the culture. Right. So this is the broader picture. Let's see some of the important things which were mentioned in this article. Right.
So the picture which you can see on the screen is of the hominid, which is an ancestor of the human beings, present day Homo sapiens, right? So as I mentioned, that they have found in this Coningen shade the technological sharpened sticks, which has certain precision, which it has been predicted that they have used certain skills to create those tools, right? And that is a significant development. अगर हम बात करें स्टोन एज की, तो बोला जाता है ऑलमोस्ट 3.4 मिलियन ईयर्स अगो स्टोन एज स्टार्ट हो गया था. दैट इज जो बेसिकली होमोसेपियंस तो नहीं थे, वो तो अराउंड 70,000 ईयर्स पे आते हैं, बट हमारे एंसेस्टर्स कुछ थे, राइट. द एंसेस्टर्स जिनसे ही हम देखते हैं कि आज के जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं वो देखने को मिलते हैं. एंड दे केम 3.4 मिलियन ईयर्स अगो. और उस समय पर आपको पता होगा पेलियोलिथिक एज स्टार्टेड, देन आफ्टर सम टाइम मेसोलिथिक स्टेज स्टार्टेड विद द एडवांसमेंट ऑफ द टूल्स. एंड during around 10,000 years ago, our Neolithic age started when agriculture started to develop. Right, the society started to establish. So these things were happened. इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया, देयर इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन बायस. दैट इज जो ये आर्कियोलॉजिस्ट है, इनका एक बायस है दैट दे जस्ट फोकस ऑन द स्टोन टूल्स, राइट, एंड दे हैव नेग्लेक्टेड द वुडन टूल्स, right. And there are certain other factors as well, such as हमें पता है कि wooden tools are not they erode very fast and they're not easy to preserve, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमें कम देखने को मिलते हैं. बट जो ये स्टडी है, that's why the study is significant. इसने हमें बताया कि wooden tools can also be an important part of daily life of the hominids which were living at that time. And ये भी चीज़ बता रहे हैं कि they can be a change related to this study. बेसिकली अभी तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ 70,000 ईयर्स के बाद से ह्यूमन बींग्स ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट करा. बेसिकली जो जो हम प्रिसीजन देखते हैं टूल्स में, वो 7,000 ईयर्स के बाद ही देखने को मिला. बट इस स्टडी ने ये चैलेंज किया दैट उसके बहुत पहले से ही दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. जो ये एक फोरसाइट होता है ऑफ डूइंग द हंटर एंड गैदरिंग, वो कहने के बहुत पहले से था. शॉनिंगन में 1990s में एक और स्टडी हुआ था जिसमें पाया गया that the tools which these hominids were using, those tools were very advanced, और वहाँ पे horses के कुछ remains देखने को मिले. उससे ये पता चला that जो human beings थे वो बहुत पहले से ही ऐसी advanced technologies का इस्तेमाल करते थे. They were engaged in certain things, and also they had the foresight and skills to do the hunter and gathering. मतलब वो जो primitive stage में जानवरों की तरह नहीं रहते थे. They were living in a comparatively advanced state, जो कि अभी studies हमें बताती है. Right, this was the significant thing which has been come out from this study, and I hope आपको ये चीज़ समझ में आया होगा. And as I mentioned, history में there can be different narratives, right? History ऐसा नहीं, आजकल के समय में हम देखते हैं that there are a lot of conflicts or there are a lot of polarization which happen when it comes to the debates related to history. लोगों के अपने अपने opinions हैं, but हमें ये चीज़ समझना जरूरी होता है that history में there can be multiple opinions, right? Two historians can come with different facts, and with those facts they can create different opinions, right? फॉर एग्जाम्पल कोलोनियलिज्म के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं. बहुत सारे हिस्टोरियंस ने फैक्ट्स के साथ बताया कि कोलोनियलिज्म बहुत अच्छा चीज़ था इंडिया के लिए. इट हैज़ लेड टू दी यूनिटी ऑफ द कंट्री. इट हैज़ लेड टू social reforms, and also कुछ हिस्टोरियन फैक्ट्स थे, ये बताते हैं कितना ज़्यादा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ हमारी हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ द कोलोनियलिज्म. सो हिस्ट्री में क्या होता है, दे कैन बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड दे कैन बी यू कैन फाइंड डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स, राइट. बट द थिंग इज, हमें अपने ओपिनियन से फैक्ट्स नहीं बनाने चाहिए. हमारे अपने कुछ ना कुछ बायस पर्सपेक्टिव्स होते हैं. लोग क्या करते हैं कि उस बायस पर्सपेक्टिव से अपने ओपिनियंस बना लेते हैं. ये राइट, ऐसा आप हमारी कंट्री में देखते होंगे, देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम्स रिलेटेड टू हिस्ट्री और रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री. ये सब डिबेट चल रहा है. द थिंग इज, हिस्ट्री में चीज़ें चेंज हो सकती हैं. हमें ये माइंडसेट रखना चाहिए कि हिस्ट्री में देयर इज नो यूनिवर्सल थिंग और देयर इज नो कांस्टेंट थिंग. हिस्ट्री कैन बी चेंज. यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड देन यू कैन मेक योर ओपिनियंस, राइट. बट ये कोई एक बहुत बिगेटेड ओपिनियन नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. एंड at the same time, हिस्ट्री का रूल एक ये भी होना चाहिए, इट कैन हेल्प अस टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी rather than to create a divide in the society, right. जैसा बहुत सोसाइटीज़ में होता भी है, एंड वी हैव सीन दिस थिंग व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन अ नेगेटिव मैनर, राइट. आई होप आपको ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा, एंड विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल.
and I hope those of you are watching, you're also making notes of the ideas which comes in the newspaper discussions, because अगर आप notes नहीं बनाओगे, सो इन चीज़ों को आप कुछ समय बाद भूल जाओगे, दो आपको अभी सुनने में मज़ा आ रहा होगा या फिर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बट नोट्स बनाने से क्या होता है, और नोट्स को सेग्रीगेट करना ही बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप सेग्रीगेटेड वे में नोट्स बनाओगे एज पर योर सिलेबस, राइट, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने नोट्स बना लिए सेग्रीगेट करके, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है, आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा। सो मान लीजिए आपने सोर्सेज से रिलेटेड कुछ आपने हिस्ट्री के नोट्स बना रखे, जस्ट ऐड दिस थिंग, दिस इज अ न्यू स्टडी, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। This question can be asked in prelims as well, or it can also be asked in mains examination. How? They can ask about the importance of sources, और मान लीजिए कोई static ही question आता है, but if you are able to use certain things which were there in current affairs, जैसे कि ये study अभी हुआ है, या फिर इंडस वैली civilization से बहुत सारी study हम देखते हैं, right? अगर आप उन स्टडीज को कोट करते हैं अपने आंसर्स में, तो दैट एनरिचेज योर आंसर, इट शोज दैट यू हैव अ फोरसाइट, यू आर ऑब्जर्विंग योर सोसाइटी इन अ बेटर मैनर, और एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, राइट? Or that's what I say in all my videos, that you should have a dynamic mind. You shouldn't be just focusing on the static things which are there, जो कि हो चुका है, but you should have a dynamic mindset. You should apply that static knowledge in a practical manner. You should read new things which are emerging, new things which are coming in the newspaper, and in that way कहीं ना कहीं आपको भी इस preparation में मजा आने वाला है. So this is the thing, right? Let's move forward to the next news. And the next news, which you can see, the article which came in the Indian Express talked about the importance of the model code of conduct and the present misuse which is happening in our country. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि in our election system, this is a tendency that many of the political parties, they do not adhere to the model code of conduct, which is an important part of our election system, and it somehow erodes the values in our election system, and the practices which should have been conducted, वो उतना अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते, राइट? सो हम देखेंगे मॉडल कंडक्ट का डिबेट क्या है हमारी कंट्री में, व्हाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री, especially for our election system, and what are the challenges which are there in our model code of conduct, right? So अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, सो दिस इज अ थिंग विच डोंट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, मतलब किसी लॉ के थ्रू उसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, इट इज अ टूल विच हैज बीन डिवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, एंड obviously it has evolved by some previous government as well, some state governments has implemented, for example Kerala ने 1960s में इसको implement किया था, but 1976 आते आते इलेक्शन कमीशन ने इसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू इशू किया, राइट? सो इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम भी है दैट इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, अगर इसको ब्रेक किया जाता है, बट स्टिल इलेक्शन कमीशन हैज सर्टेन राइट्स टू एनफोर्स दिस थिंग, जो कि हम देखने वाले हैं, राइट? तो इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है इट हैज दिस पर्पस दैट इट हैज टू कंडक्ट फेयर, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। मतलब आपको पता है कि इलेक्शंस आर लाइफ ब्लड ऑफ अ डेमोक्रेसी, मतलब अगर प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगा? और वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, पीपल आर नॉट वेरी मच aware of the electoral setup and also about the political system, लोग इतना participate नहीं करते, तो उनके लिए तो इलेक्शन बहुत जरूरी होता है, because that is an exercise जहाँ पे लोग अपने राइट्स को, जो उनका पॉलिटिकल राइट्स है उसको enjoy करते हैं, राइट? सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंस था कि इट लीड्स टू फेयर एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, बिकॉज आपको पता होगा हमारी कंट्री में देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस, देयर इज मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट? बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो रिलीजन या फिर आइडेंटिटी मार्कर्स को यूज करते हैं टू मोबिलाइज पीपल, और आपको पता है दैट दिस आइडेंटिटी मार्कर्स are not good for election. Why? Because आपको पता होगा कि it kind of distracts voter attention from the main issues which are there. ये कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स में मेरिट्स होता है उसको साइड में रख के इन आइडेंटिटी मार्कर्स को ज़्यादा वोटर्स देखते हैं, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर थिंग फॉर डेमोक्रेसी। इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर प्रैक्टिस which happen, तो उन बैड प्रैक्टिसेस को सॉल्व करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी हो जाता है, राइट? एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लेवल प्लेइंग फील्ड टू दी एवरी अपोजिशन पार्टी। हमारी कंट्री में एक और फिनोमिना हम ये भी देखते हैं थ्रू आउट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दैट जो रूलिंग पार्टी होती है दैट इज काइंड ऑफ अ डोमिनेटिंग पार्टी, कहीं ना कहीं डोमिनेंस होता है, और अपोजिशन पार्टी कहीं ना कहीं वीक हमें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में अपोजिशन की वीकनेस इट्स वेरी मच विजिबल। सो कहीं ना कहीं ये जो मॉडल कोड ऑफ ये अपोजिशन पार्टीज को, जो अदर स्मॉलर पार्टीज हैं, उनको कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, बिकॉज
इट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग इन अ डेमोक्रेसी। अगर उन पार्टीज को वॉइस नहीं मिलेगा, दैट हाउ दे विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द डाइवर्स वॉइसेस, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी प्रोवाइड करवाता है सभी पार्टीज को। और अगर हम देखें, सो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा है, दैट इज दी दोज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैनॉट बी चेंज बाय द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया कि आर्टिकल 324 जिसके थ्रू ये पूरा इलेक्शन का सेटअप है, इलेक्शन कमीशन को भी उसी के थ्रू बनाया गया है, एंड इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज दिस थिंग, राइट। सो इसलिए ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम हमने बात किया दैट इट इज नॉट एनफोर्सेबल, राइट। एंड इसके एवोल्यूशन की भी हमने बात किया, दैट इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। It can be asked in your prelims examination, obviously. And then in 1976, the election commission came up with the guidelines. But इसका हम implementation देखते हैं after 1990s, when one election commissioner, TN Session, came in the office and he very vociferously implemented the model code of conduct. उन्होंने बहुत सारे लीडर्स की नाक में दम कर दिया था उस समय पर, बिकॉज जो गाइडलाइंस इसमें दिया हुआ है उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया। उससे पहले ये गाइडलाइंस लाया तो गया था, मगर ग्राउंड पर उतने अच्छे से फॉलो नहीं हुआ था। हम देखते थे कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे थे जो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। दे वर यूजिंग दी आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन, दे वर यूजिंग कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, these kind of things for mobilizing people in the election. But जब ये चीज़ हुआ, टीन सेशन जब पावर में आए, उन्होंने इस चीज़ को रोका कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं इट सेट अप एज अ मॉरल कोड फॉर द पॉलिटिकल लीडर। और उसके बाद हम देखते हैं कि थिंग्स इम्प्रूव, बट एट द प्रेजेंट टाइम्स वी आर अगेन सीइंग दैट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन अ वे इन अ बैक सीट। कहीं ना कहीं इतना प्रॉपरली इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है हमारी सोसाइटी में, एंड विच इज़ अ कंसर्निंग थिंग फॉर कंट्री, राइट। अब जरा बात करते हैं व्हाट आर दी थिंग्स विच आर देयर इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, किन किन चीज़ों पे ये रोक लगाता है। सो अगर हम इसकी बात करें, सो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बोला जाता है दैट इलेक्शंस के समय पर, जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, सो government has to going to have this responsibility that they can't issue certain new schemes or policies, right? मतलब गवर्नमेंट कुछ promises नहीं कर सकती इलेक्शन के थोड़ा टाइम पहले, ये थोड़ी होता है। तो गवर्नमेंट ने, मान लीजिए इलेक्शन आने वाला, गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस करा कि हम सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए देने वाले, या फिर हम सभी कुछ भी ऐसा चीज जो कि अनफिजिबल है, राइट। सो उस तरीके की प्रॉमिस नहीं करेंगे, तो उस तो बेसिकली लोगों का परसेप्शन गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू वोट फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज गोइंग टू इरोड आवर इलेक्शन सिस्टम। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट के कोर्स में होना चाहिए, जो 5 years का हमारी कंट्री में होता है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले रही है, तो इस चीज़ को ये मना करता है। अपार्ट फ्रॉम एज वी हैव मेंशन दैट देयर इज कम्युनल मोबिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी मार्कर सच एज लैंग्वेज, रेस और एथनिसिटी, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ये रोकता है। और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अगर एंगेज करते हैं इन चीज़ों में, सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं ना कहीं इसको डिस्करेज करते हैं, राइट। एट द सेम टाइम अगर किसी पॉलिटिकल लीडर पर दूसरे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा देयर इज एन अनवेरीफाइड एलिगेशन और सम डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट्स, कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, दैट इट कैन सेट अप गाइडलाइंस, और इट कैन डायरेक्ट द पॉलिटिकल लीडर्स दैट यू कैन नॉट एंगेज इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, राइट। this is the thing. Apart from that, polling के समय पर इसका एक important role है। It set up the guidelines for the polling booths। मतलब polling booths के समय पर कोई भी जो पार्टी का मेंबर है वो एंटर नहीं करेगा। अगर वो एंटर करते हैं वोट देने के लिए, तो उनको they have to have a certificate, right? अगर वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, these are the certain things which have been mentioned। And at the same time, जो ministers हैं, they cannot use the government machinery for the official visit or the government work, right? This is also an important part, right? अब जरा बात करें कि क्या इश्यूज है। ऑब्वियसली हमने बात किया कि दो इट्स अ गुड आइडिया, इट्स एन आइडिया विच कैन स्ट्रेंथन दी आर इलेक्शन फ्रेमवर्क, बट इन अ वे बिकॉज इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता थ्रू लीगल बैकिंग। मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है कोई एक्शन ले रही है, या फिर जुडिशरी कोई एक्शन ले सकती है, बिकॉज इट्स नॉट इन्फोर्सेबल। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, एंड विच इज अ बिगेस्ट कंसर्न विच इज रिलेटेड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एट द सेम टाइम ये भी बोला जाता है दैट देयर इज सर्टेन वेगनेस विच इज देयर इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब इसमें जो बातें बोला गया है, कई बार ये हर चीज को कवर नहीं कर पाते हैं, एंड इसका इंटरप्रिटेशन करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। विद देयर सर्टेन देयर might लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स which emerge in the present time, and also इसका जो स्कोप है कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है, बिकॉज इसका फॉर्मुलेशन जो हुआ था, it happened during 1976, और अभी के समय पे देखते हैं there are certain other things which has emerged. So in the website I have written an article you can also
refer the Plutus IAS website where I regularly write articles. I have written an article yesterday on the impact of social media on democracy. और हम देखते हैं कि social media has emerged as an important tool which can influence the election, right? और इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं ये इसके स्कोप में नहीं है, and it is outside the purview of the border code of conduct. So कहीं ना कहीं it's a bit of an obsolete guidelines which should have been reformed or evolved over the time. इस चीज को भी change करने की जरूरत है, and these are certain challenges and issues which are there, right? And that's why many of the scholars say that there is a certain kind of statutory backing which should come in from the legislature, and कहीं ना कहीं इसको enforceable बनाना चाहिए, so that अगर इसका उल्लंघन होता है तो definitely the victim can approach the courts, right? सो अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने इलेक्शन सिस्टम को और ज़्यादा फ्री एंड फेयर एंड रोबस्ट बना पाएंगे, लोगों को ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएंगे, एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी. सो विद दैट वी हैव रीच्ड to the end of the discussion. I hope आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे जो भी हमने बात करा. The ideas which we have discussed that can definitely help you in your mains preparation. Those ideas can definitely help you in enriching your answers. And so if you like the video, you can definitely give it a thumbs up, and I hope आपको आपकी preparation में मजा आ रहा होगा. You are lively when it comes to your preparation. You are enjoying this process, because definitely when we get to learn new things which comes daily in the newspapers or the subject which you study, it enhances our personality, right? It is not a thing which is a burdening for the citizens or the people who are doing this. And that's why I say it's a self improvement process. It's a self realization process जिसमें आपको अपनी personalities के बारे में जानने को मिलेगा, आपको अपने self attributes के बारे में जानने को मिलेगा, and in that way definitely it's going to be a life changing process. So with that, we're going to meet tomorrow, and thank you so much.